I am speaking from Newton study. I am going to teach physics of class 10th. The topic is related to reflection of light. Today I am going to tell about how will you gain image formed by the concave mirror. Formation of images by a concave mirror. Formation of images by a concave mirror. There are four types of rays which are used to construct ray diagram for locating images formed by a concave mirror. There are four types of rays which are used to construct ray diagram for locating images formed by a concave mirror. जनरली जो है फोर टाइप्स रे होते हैं जिसका जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है. फर्स्ट, एन इंसिडेंट रे. एन इंसिडेंट रे which is parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror. It passes through focus. An incident ray which is parallel to the principal axis after reflection from the concave mirror, it passes through focus. यदि कोई इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो है फोकस से पास करता है, जिसका रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. एन इंसिडेंट रे विच इज parallel to the principal axis after reflection from the concave mirror, it passes through focus. यदि कोई रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से पास करती है, जो कि इस फिगर के द्वारा क्लियर है. सेकेंड, एन इंसिडेंट रे विच passes through focus of a concave mirror after reflection, it becomes parallel to the principal axis. An incident ray that passes through the focus of a concave mirror after reflection, it becomes parallel to the principal axis. जो ये फिगर बी के द्वारा क्लियर है. दिस रे इज इंसिडेंट विच पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. एन इंसिडेंट रे विच passes through focus of a concave mirror after reflection, it becomes parallel to the principal axis, which is clear the figure B. This ray is reflected ray, this is the principal axis, each other parallel. This ray is incident ray. An incident ray that passes through the focus of a concave mirror after reflection, it becomes parallel to the principal axis, which is clear by the
figure B. Third, a ray of light which passes through the center of curvature. A ray of light which passes through the center of curvature. It comes back on the same path. यदि कोई इंसिडेंट रे जो है कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम बैक इट्स ओरिजिनल पाथ. ए रे ऑफ लाइट विच passes through center of curvature of a concave mirror, after reflection it comes back its original path. यदि कोई रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है कनकेव मिरर में, यदि कोई जो है कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करता है तो सेम रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर रिटर्न हो जाता है. नेक्स्ट, फोर्थ, ए रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स एट द पोल ऑफ ए कनकेव मिरर. ए रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स at the pole of a concave mirror, after reflection it gets reflected such that angle of incident is equal to angle of reflection. A ray of light that falls at the pole of a concave mirror, it gets reflected such that angle of incident is equal to angle of reflection. This ray is incident ray, this ray is reflected ray, this angle of incident, this angle of reflection. When a ray of light falls at the pole of a concave mirror, it gets reflected such that angle of incident is equal to angle of reflection. These four rays are used to construct ray diagram for locating the image formed by a concave mirror. These four rays are used to construct ray diagrams for locating the image formed by a concave mirror. ये फोर रे जो है कनकेव मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं. एनी टू रेज जो है यूज कर सकते हैं. नाउ आई स्टॉप माई टीचिंग. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक. थैंक यू.